Hi guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CLAT 2024. I'm going to give you a 16 to 17 month strategy for CLAT. Self study strategy है, with coaching strategy है, सब कुछ है, but you should not miss out on the strategy. It is very important. Part 1 of the video is already up. Part 1 में मैंने आपके सारे questions जो एक 2024 aspirant को questions हो सकते हैं CLAT से related वो सब कुछ मैंने आंसर कर दिया इस वीडियो में. सो डू चेक दैट वीडियो आउट. एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट some of the other things like a strategy, what you should do, how you should use these 16 to 17 months that you have, what are the things that you should do, right? How you should study, all of this, which is very important. So let's get started with today's video. I'm going to leave the link of the part 1 in the description box as well as on the screen. So after watching this video, do watch that video. It's a very important video. आज के सेशन से स्टार्ट करते हैं. Let's get started. Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you're subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name at I am Loggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. Number one question is when is the exam and who can give the exam? So बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि एग्जाम कब होगा. मैंने पहले भी आंसर कर दिया कि एग्जाम या तो दिसंबर 2023 में हो जाएगा आपका, ठीक है ना, या तो दिसंबर 2023 में एग्जाम होगा या फिर मई और जून 2024 में आपका एग्जाम हो सकता है. चांसेस है कि दिसंबर 2023 में आपका एग्जाम हो जाए CLAT 2024. तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि अगर हमने 12th के बोर्ड्स तो अभी दिए नहीं होंगे 2023 में, हमारे बोर्ड्स तो 2024 में होंगे, तो क्या हम अगर एग्जाम दिसंबर 2023 में होता है तो हम एग्जाम दे सकते हैं? जो 12th वाले बच्चे हैं जिनका जब आप 12th में होंगे और आप बोर्ड्स 2024 में देने वाले होंगे तो बिल्कुल आप दिसंबर 2023 वाला एग्जाम दे सकते हैं. और जिन्होंने अपनी 12th पास कर ली है, रिजल्ट आ गया, तब भी आप दे सकते हैं. कोई कंपल्शन नहीं होती है कि जिस दिन आप एग्जाम में अपियर हो रहे हो तब आपका 12th का बोर्ड्स का रिजल्ट आ जाना चाहिए. नो, ऐसा कुछ भी नहीं है. बल्कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हु गिव दिस एग्जाम, दे आर दो स्टूडेंट्स जिनका 12th का रिजल्ट अभी आना होता है या उनको बोर्ड के एग्जाम्स देने होते हैं. आपके पास एक ऑप्शन होती है फॉर्म में, आप अपियरिंग फिल कर सकते हो. अपियरिंग के बेसिस पे मतलब कि अभी आप अपियर होने वाले हो 12th बोर्ड्स में या हो चुके हो, ऐसा भर सकते हो. एंड बाय द टाइम जब एडमिशंस होते हैं उनको भी पता होता है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वही अप्लाई करते हैं जिन्होंने 12th बोर्ड्स देने हैं या अभी उनका रिजल्ट नहीं आया है. तो वो जो फाइनल सब कुछ होता है ना, वो आपके जब बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है तब तक ही होता है, राइट? तो आपको समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बच्चे ये समझते हैं कि जब हमारी 12th की रिजल्ट आ जाएगा तो उसके अगले साल हम एग्जाम दे सकते हैं. नो, ऐसा नहीं होता है, राइट? It is my request again, please watch everything about CLAT 2024 video because this is something that every CLAT 2024 aspirant would want to watch. Which stream? Why not medical? Why non-medical or commerce? With maths, should you go for it? Should you take maths? I have answered all of these questions. Around 14 to 15 commonly asked questions have been answered in that video. It's going to be really helpful. The syllabus, the books, how to study, everything has been answered. Link is in the description box. When should I start studying for CLAT 2024? Number one question कि कब पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए. 11th में पढ़ना स्टार्ट करूँ और 12th में, क्योंकि 2023 के अंदर एग्जाम है, या 2024 में तो अभी पढ़ लूँगा तो बोर हो जाऊँगी. क्या करना चाहिए? देखिए, द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर, right? The earlier you start the better. If you want to be a lawyer, you want to give CLAT, you want to crack CLAT, जब आपको पता चलता है इस एग्जाम में और जब आपको फीलिंग आती है कि हाँ मुझे लॉयर बनना है, मुझे CLAT का एग्जाम देना है, तभी उसी दिन से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए. स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू बिगिन विद योर प्रिपरेशन. बट येस, the best time to start is 11th class. Best time to start, because in 12th you'll have your board exams, and balancing to create a balance between your boards as well as your CLAT preparation is difficult. It is very difficult, right? So if you complete your syllabus in 11th, if you complete your syllabus in 11th, that is the best thing. In your first year, that is in 2022, you complete the syllabus. Your aim should be completing the syllabus, which would consist of क्या क्या चीज़ें करनी होगी. आपको नोट्स बनाने होंगे, बुक में ही नोट्स बनाने हैं, सेपरेट नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है. अंडरस्टैंड करना होगा, थ्योरी पढ़नी होगी हर चीज़ से रिलेटेड.
प्लस आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होंगे। तो फर्स्ट ईयर में आप हर टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सबका ये कर दोगे, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास सेकेंड ईयर आएगा जो कि होगा 2023, ठीक है ना। 2023 के अंदर हम क्या करेंगे, 2023 के अंदर हम रिविजन करेंगे, मॉक्स अटेम्प्ट करेंगे, करंट अफेयर्स जो हमारे 2023 के करंट अफेयर्स है वो पढ़ेंगे, ठीक है, एंड वर्किंग ऑन वीक टॉपिक्स। सो दिस इज द बेस्ट प्लान, you should go by it please. I know a lot of people, a lot of teachers are going to tell you कि नहीं 12th में prepare कर लो, crash course join कर लो. No, it is very important that if you want to give CLAT and in your 11th class you know about CLAT, start preparing now. I'm not saying कि आप 12th में prepare नहीं कर पाओगे, but you have an easier option. 11th में syllabus खत्म कर लो, ठीक है, and in 12th you are just going to work on your weak topics. You are just going to attempt test papers. You are just going to work on improving your score, ठीक है। So this is the best time. 11th is the best time. Aim should be that you complete your syllabus in 11th. Yes, bilkul. In 12th, boards pressure is there. School takes more exam. Even if you are taking dummy admission, you have to make sure that you complete the syllabus of 12th as well. राइट। सो 12th का प्रेशर ही अलग होता है, 11th में कर लो। 10th का टाइम याद है ना, 10th के बोर्ड्स के टाइम पे कितना प्रेशर आ गया था। तो 11th के अंदर अपना क्लैट का सिलेबस खत्म कर लो। जो 11th का आपका क्लास का मतलब स्कूल का एग्जाम्स है उसके अंदर वही सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ो जिनकी आपको ज़रूरत है 12th में, जिनका बेस चाहिए आपको 12th में। बाकी सब ऊपर ऊपर से पढ़कर एग्जाम दे दो, मेन फोकस अपना क्लैट पे रखो अगर आपको लॉयर बनना है, इफ़ यू आर अ सीरियस क्लैट एस्पिरेंट, राइट। Now, what you should do after watching the videos, part 1 and part 2. After watching part 1 and part 2, what I want you to do. Number 1 is note down the syllabus of CLAT 2024. Everything about CLAT 2024 video, I have discussed section wise topics. Each section I've given you the topics, I've provided you with the topics and from which book you have to study, books and how to study. सब बताया कि कैसे पढ़ना है, कौन सी बुक में से पढ़ना है, टॉपिक्स कौन से हैं. So note down the syllabus. Having the syllabus is very, very important because you should know now that the books that you're going to study from are not written only for CLAT, right? Even if they are written for law, like law entrance exams, there are so many law entrance exams, right? So you need to know that what you have to study for CLAT. That is why it is very, very important to study the syllabus. One of the biggest mistakes that students commit is that they don't know the syllabus and they end up studying that is not there in the syllabus. So knowing the syllabus is very, very important, right? I have discussed all of this. Step 2 is buy all the required books. No doubt in part 1 I said okay, buy some books because then you'll have fear in your mind that you have to study so much. I would say that if you have to plan your entire year, it is very, very important to yes that you buy all the books together. Now to keep this fear away, number one is if you get the fear that oh I have to study all these books, how I will study, मैं कैसे पढ़ूंगी, मुझे सब कुछ पढ़ना है, कैसे होगा, use that fear for motivating yourself. Use that fear as a motivation that I have to complete my syllabus quickly. I cannot waste my days because in the Almira there are certain books that I have to study, and if I waste my days, I won't be able to complete the syllabus. Number one. Number two, keep the only those books on your study table that you have to study for the day or for the week, and keep all other books in the Almira. Right? Buy all the required books. Now, step 3 is create a month-wise year plan. Now, you have to plan for the year. You are going to plan for the year. So basically you're going to create a monthly plan that in which month you're going to complete which subject or which topics basically you're going to complete, and then you're going to have your weekly plan. Then you are going to have your weekly plan that in first week of June I'm going to work on these things, in second I'm going to work on these things, third. Then you're going to have daily plan that okay, in first week of June I have to complete this part, so daily I'll be covering 4 pages of this 5, so it should be a detailed plan. Now I've done a video, मैंने एक video करा है that how you have to plan, how to make a schedule. You have to watch 2 videos, how to make a schedule and how to study for law entrance exam. Both of these videos are really, really important. So I'll create a playlist of around 10 to 12 videos that I want you to watch. Look, part 1 you watch yourself, I'll be giving the link in the description box, and there would be one playlist
For CLAT new aspirants, I think you should watch all the videos one by one, make notes of those videos. It is going to help you a lot, right? So this is what you have to do. You have to create your schedule, and number one thing जो आपको करना है वो ये करना है, decide how much time you will be studying for CLAT every day. You need to fix a slot. If you can fix a slot, that would be great. Fix a slot that in the morning before I go to school 5 to 6 I'm going to study for CLAT. Thereafter in the evening I have 5 to 9, 7 to 9 which is free. 9 to 10 I take my rest, and 10 to 11 I'm again going to at night study for CLAT. I'm going to fix my time for CLAT, right? And I'm also going to see how much time I can take out for CLAT. Now, how to decide that how much time you can take out for CLAT? You need to make a schedule. You need to see that, okay, from school is from this much to this much duration. I come back home, I rest, I have my lunch, I sleep for a while, and thereafter I'm fresh. I have this one tuition and all and then you have to take out when you're free. And then you have to allot time that, okay, in this time I'm going to study for my school, and for the rest I'm going to study for CLAT. So you need to fix the slots, right? Thereafter, check the topics that need to be covered, right? I have given you the syllabus in part 1, so you know the syllabus, you know the topics, you know that from which book you have to study. So go through the topics, right? I'm not saying that study the topics, no. You just have to run through the topics to check out कि कितना बड़ा है, ठीक है, कितने दिन लगेंगे, how many days will it take to cover the topic. This is very very important to find out. Now how to find out that how many days it is going to take? Run through the pages. For example, you say that this topic I can cover, I'm going to give 2 hours every day, okay, 2 hours every day, and I'm going to cover the topic in say 10 days, okay. Add 10 plus 3 or 10 plus 5 and say, okay, in the schedule write down I'm going to take 15 days, maybe from 2nd June, okay, gone, maybe from 1st June to 15th June I'm going to study this very topic from this very book. Okay, so this is how you plan. This is how minutely you have to plan, okay, and you can plan, okay. So that it was, write down the number of days in front of the topic in your planner, okay, number of days in front of the topic in your planner. Planner is nothing but a notebook wherein you plan everything related to CLAT. Allot the days in the month when you want to cover the topic. Right now, in front of the topic, you've written 15 days. For example, I have criminal law. I say from the book, I will take say 7 days, adding 3 days, it comes to 10 days. Okay, 10 days, and then I'm going to allot a date to this topic, that this month, from this day to this day, I'm going to study criminal law. Right? So this is what you have to do. Plan out months, then weeks, then days. Check out how to make schedule video. Okay. Thereafter, what is the step 4? Step 4 is keep all the books in the almirah except those you need for the week or for the day. Okay, this is very very important. And even if fear comes, you have to convert it into motivation. Convert into motivation. हो जाएगा? Yes, my loggerians. In the chat section, everybody, can you do this? Yes, you are going to stay motivated. Motivation is very very important. If there is a day when you're not feeling motivated, you will force yourself to study. If there is a day when you were not able to study, the next day you're not going to feel guilty. Instead, you're going to convert that guilt into motivation to study. You're not going to waste days. Write down in the comment section, I am going to make good use of these 16 months. I am going to make good use of these 16 months. Promise loggery. Write down in the comment section below. Everybody. Step 5. Promise yourself you are going to follow the schedule consistently. Write down this. I'm going to follow the schedule. Promise, 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 loggery, Didi, promise. In the comment section, in the chat section, everybody. That is study every day. Even if you miss your studies for a day or some day, instead of feeling guilty, jump back to studies. Yes, this is one of the biggest mistakes that students commit. What is the mistake that they commit? When they don't study for a day, they don't study the next day also, thinking that now everything is gone. No, jump back. Try to cover the syllabus. Whenever you find some extra time, there's a holiday, there's a vacation, there is anything extra at school, you have a period wherein you're free, pick up the book and start studying. Don't waste a minute, don't waste a second. Even if you miss out on something for a day, next day don't feel guilty. I know that guilt is going to be there, but don't end up just thinking that the game is over. No, it is not over. If you jump back, you can get back there and then. Okay. Next,
Say no to these books. Now, this is common mistakes. Common mistakes. Yes, you should not go for these books. Which are those books? Number one is Your Word Power Made Easy by Norman Lewis. Now, Word Power Made Easy by Norman Lewis is a very, very bulky book, right? Now, for vocabulary, people are going to tell you that, okay, go for Norman Lewis because it is a very good for vocabulary. No doubt about that. Yes, it is a very, very good book. But because you guys have good amount of time, no doubt about that. 2024 aspirants have a good amount of time. But you need to keep that in mind that you have to make good use of that time. Good use of time, right? What is good use of time now? If we look at the English section of CLAT, right? What is going to be there? Passages. Passages are going to be there. In the part one, we saw the question paper, passages, passages, and passages, right? If you've not seen the previous year question paper, link is in the description box. You can check that out. Now, passages are there. From the passages, maximum you can get 5 questions related to vocabulary. 5 questions related to vocabulary based on the passage. passage पे basis पे vocabulary आएगी English के अंदर, ठीक है? नंबर वन ये आ सकता है. नंबर टू, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, इफ यू आर गुड विद योर वोकैबुलरी, देन इट विल हेल्प इन रीडिंग passages, right? That is why vocabulary is very, very important for CLAT. But what is the main part of English? Main part is reading comprehension. Yes or no? In the chat section, everybody. Yes or no? Reading comprehension is the main part. Yes or no? Yes. Reading comprehension is the main part. So our step one should be to know how to solve RCs, to know how to solve RCs, right? So we should give more time first to know that how we have to solve reading comprehensions, right? Number one, don't commit this mistake that you've not done your reading comprehension and you've read this book. No, no, that is not going to help, because what you need to make sure is that you know how to solve reading comprehension questions that are different from what you solve at school, right? So that is important. This is your step one, okay? And also, if you have to cover vocabulary for CLAT, Norman Lewis is going to help you a little, but what is going to help you more? What is going to help you more, I repeat, is reading the newspaper. If you read the newspaper, you mark the new words, find the meaning, you mark the new words, guess the meaning of the word, and then find the meaning of the word, and then note it down in the notebook and keep on revising from here. This is the best way to cover vocabulary for CLAT. This is the best way, because these passages are mostly from journalistic sources. Now, what is journalistic sources? Your newspaper websites, and the newspaper has some common difficult words. Yes, these, if you cover these some common difficult words and commonly used words, if you cover these from the newspaper, that is the best way to cover vocabulary. Yes, yes, that is the best way. You know, in 2021, there was a passage in English section of CLAT which had this word inoculation. Inoculation, because in 2021 vaccination was the talk of the town. COVID-19 vaccination was the talk of the town, right? So inoculation, what is inoculation? Vaccination. Now, whoever had read the newspaper in those days was able to answer the question from that passage. All others were not. They were attempting the answers wrong, right? So newspaper vocabulary is what you need to cover. Studying that book might help you a little, but if you cover your vocabulary from the newspaper, 99.9% that is going to help you more, guaranteed. I've done a video also how you can cover vocabulary for CLAT from the newspaper and all. So please, and even if you have to cover Norman Lewis by Word Power Made Easy by Norman Lewis, I would say first complete the entire syllabus that I have discussed in your part 1. Thereafter, if you find time, go for this book. But first, please don't go
go for this book. No, if you really want to cover this book, first complete the syllabus, whatever is important, cover that, and then you have time, your free time, then you can go for this book. But first, you should not go for this book. No, you cannot go for this book. Okay. Next is Quantitative Aptitude by R.S. Agarwal. No, no, this is a very, very bulky book. You don't need this book. Only 15 to 17 questions from CLAT. We can cover from 30 Days Wonder by S. Chand. This is not the need of the hour. If you want to buy 30 Days Wonder by S. Chand, you're not able to find the book. Link is in the description box. Check that out. Verbal, and for even for your reading comprehension, you can buy Arun Sharma. There's a book for CAT exam, Arun Sharma. Okay, link is in the description box. Next is Verbal and Non-Verbal Reasoning by R.S. Agarwal for entire logical reasoning. Now, in part 1, I've explained you puzzle test is one topic, but puzzle test is only one topic that you have to cover from this book, Verbal and Non-Verbal Reasoning by R.S. Agarwal. Right. Now that too, the one passage was there from puzzle test. When? In which year? In 2020. Right. Therefore, 5 questions were round about there from this topic. Now, all others from your assumptions, arguments, inference, conclusion, all others. And for that, you can go for Willy's book. And for that, you can go for Willy's book or MK Pandey. Again, I've explained how to study and everything in the part 1. Right. But this cannot be your main book, and this book should be bought when entire syllabus is done, when entire syllabus important topics are done, then you should buy this book. This should not be your first go-to book, because in 2021 no question was there from this book, from this topic called puzzle test. So we need to cover these topics afterwards when we are done with the main topics. We should not cover the less important topics first. We should cover the most important ones first, and thereafter the less important ones if we have time. If we have time. Clear? Now, studying legal studies NCRT book for your legal reasoning or law. Now, this is another thing. Look, this book, yes, it is a good book. People say concept clarity we need. Okay, concept clarity we need. But do you have time to study 2 of these books plus one book more, the competitive exam book? Tell me, do you have this much of time? I don't think you have time. अभी लग रहा है 16 months हैं. But you will have your school exams. You will have times when you won't be able to study because of XYZ reason. Right? Why are you wasting your time on these 2 books? You need to, and moreover, this book is not written for competitive exams. So there are certain things that you're going to miss. There are a lot of the things that you're going to miss in NCRT. If someone, a professional, is teaching you NCRT, then it's fine. If they're adding those things. So I won't recommend legal studies. I'll say go for Willy. Go for Willy's book. Again, the link is in the description box. LALR by Willy. Don't go for this book. Legal Studies by NCRT. Okay. Now, what is your step 1? Step 1 is start reading the newspaper. Yes, start reading the newspaper. This is very, very, very important. Newspaper covers your current affairs. That is your general knowledge section. Covers your current affairs. It helps you with vocabulary. It helps you with increasing the reading speed. It helps you with increasing the reading speed. Yes, you need to start reading the newspaper. Very, very important. And I'm taking live classes every day from 6 to 7 on my channel Exam Eye for free. If you're not free from 6 to 7, you can watch the live class afterwards also. It is there on the channel. Link is in the description box. 99.9% will find it difficult. They will find substitutes. You will find substitutes, and find there'll be a day when you couldn't find a substitute and the exam is going to take place. Yes, this is one of the biggest mistakes. You find substitutes that अगर न्यूज़पेपर ना पढ़ें कुछ और कर लें तो वो क्या है, कुछ और है ही नहीं है. न्यूज़पेपर का सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्लैट के लिए तो नहीं है. फिर आप कोई और, अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना ना, तो क्लैट को मेन फोकस मत रखो, स्लैट को रख लो, MHCET को रख लो, जिसमें कि आप मैगजीन पढ़कर भी करंट अफेयर्स कर सकते हो. क्लैट नहीं कर सकते.
क्लैट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लैट अगर क्लियर करना है, एनएलयू के अंदर जाना है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जाना है, तो न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो सब्सटीट्यूट। देन व्हाट टू डू, बता दिया 6 to 7 मेरा जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो सुन लो, वो सुनना स्टार्ट करो धीरे धीरे, क्योंकि उसके अंदर मैं आपको बैकग्राउंड न्यूज़ समझा देती हूँ कि क्या है, क्यों है, क्या है, कैसे है, तो वो समझ में आ जाता है। नंबर 1, ठीक है, आपके लिए बैकग्राउंड स्टडी करना नो डाउट बहुत डिफिकल्ट है, मैं आपके लिए आपको करके दे देती हूँ, तो वो समझ में आ जाता है। नंबर 1। नंबर 2, जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं मैं उसके मीनिंग भी आपको नोट करवा देती हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर आप मेरे क्लास अटेंड करो तो बहुत बढ़िया रहेगा। और एक यहाँ पे आपको टिप दे रही हूँ, वो टिप ये है कि आप अपने साथ अपनी रफ नोटबुक लेकर बैठें, जब सेशन को सुन रहे हैं तो रफ नोटबुक लेकर बैठें, और उसमें जो जो मैं समझा रही हूँ वो फटाफट फटाफट नोट करते रहें। ठीक है ना, चाहे आप इन नोट्स को कभी रेफर ना करें, नेवर कोई नोट्स को रेफर ना करें, बट क्योंकि आप राइट कर रहे हैं, राइटिंग एंड लर्निंग कर रहे हैं, राइटिंग एंड लर्निंग कर रहे हैं, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो याद भी रहेंगी। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफ यू, मैंडेटरी है, ये कर लिया। ये पहले नहीं होता था, अभी स्टार्ट हुआ एग्जाम हमारे पे। द हिंदू का न्यूज़पेपर एनालिसिस बहुत बच्चों ने रिक्वेस्ट करके स्टार्ट करवाया है, बहुत बच्चे बहुत खुश हैं इसके एनालिसिस से। वो कहते हैं कि दीदी हमें न्यूज़पेपर अब समझ में आने लग गया, सो व्हाई आर यू मिसिंग आउट, बिल्कुल फ्री है, दिस इज फॉर फ्री। ठीक है ना, उसके बाद ऑल्सो वॉच वीकली एनालिसिस, आपका मैं टेस्ट लेती हूँ और रिविजन भी साथ में करवा देती हूँ। कब, संडे को 5 बजे, हर संडे 5 PM आपकी रिविजन होती है एग्जाम आयर पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है चैनल का। उसके बाद 80 to 85% न्यूज़ इज कवर्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर, रेस्ट यू कैन कवर फ्रॉम द मैगजीन। ठीक है, अब आप कहोगे अगर हम पूरी मैगजीन में से कवर कर लें, देखो न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ पॉइंटर्स आपके न्यूज़पेपर में ही कवर होते हैं। यस, कुछ पॉइंटर्स न्यूज़पेपर में ही, द हिंदू में ही कवर होते हैं। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना है, द हिंदू। आपके यहाँ द हिंदू नहीं आता तो आप ऑनलाइन एडिशन ले सकते हो, ई सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। ठीक है, दिल्ली वाला एडिशन आपको पढ़ना होता है, अगर आप दिल्ली से नहीं हो तो ई सब्सक्रिप्शन लो, दिल्ली वाला न्यूज़पेपर पढ़ लो। सब्सक्रिप्शन नहीं बाय करनी है तो टेलीग्राम पे भी न्यूज़पेपर शेयर होता है, एग्जाम आयर के जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर मार्क न्यूज़पेपर जैसे ही क्लास होती है उसके बाद वो शेयर हो जाता है। ठीक है ना, एट ऑफिशियल एग्जाम आयर है चैनल का नाम। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब यहाँ पर 80 to 85% न्यूज़ आपकी न्यूज़पेपर से कवर होते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं, ये मैंडेटरी है, देखो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्लस हम एक करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़ेंगे, वो कौन सी होगी, आईएएस विजन या फिर दृष्टि आईएएस। अब आप पूछोगे बेस्ट कौन सी है, दृष्टि आईएएस ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, बट इसके 2 एडिशंस आते हैं, मंथ में 2 एडिशंस आते हैं दृष्टि आईएएस के, और आईएएस विजन का एक एडिशन आता है, तो आप कोई भी चूज कर लीजिए, दोनों ही अच्छे हैं, प्रेफर दृष्टि आईएएस करिए। ठीक है, और इसका प्रिंट आउट निकालना है और फिर पढ़ना है, पार्ट 1 में भी मैंने बताया है सब कुछ। और ये मैगजीन इसलिए पढ़नी है क्योंकि हमें बैकग्राउंड न्यूज़ यहाँ से अच्छी मिल जाती है। क्लैट के लिए हमें स्टैटिक जीके नहीं पढ़नी होती, हिस्ट्री ज्योग्राफी की जो न्यूसेंस अरिहंत की ये बुक है ये आपको नहीं चाहिए। ठीक है, क्लियर है। विच न्यूज़पेपर मैंने आपको बता दिया कि हिंदू ई सब्सक्रिप्शन डेली एडिशन, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द हिंदू इफ यू लिव इन दिल्ली। ठीक है, क्यों अपनी आंखें खराब करनी है। हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, शुड यू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर, इज इट मैंडेटरी। देखिए नोट्स बनाने मैंडेटरी है, मैंने आपको बता दिया ना, रफ नोट्स बनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये तो बनाओ ही बनाओ रफ नोट्स की, इनको रेफर नहीं करना बट पढ़ते समय कर रहे हो ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, रफ नोट्स ये मैंडेटरी हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन नोट्स हैं, ठीक है, मेन नोट्स अगर बनाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि मेन नोट्स आप कंसिस्टेंटली बना पाओगे, मेन नोट्स के अंदर पहले न्यूज़पेपर, वहाँ पर जब न्यूज़पेपर एनालिसिस होता है मैं बताती हूँ ये नोट करो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो कर सकते हो, प्लस एड ऑन कर सकते हो मैगजीन में से, तो इसके जैसी कोई बात ही नहीं है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है ना, जब आपको रिविजन करनी है और ये सब कुछ करनी है, बट आपको लगता है आप नहीं कर सकते हो तो ये क्रॉस आउट कर दो, मैंडेटरी नहीं है। बट हमारे पास नोट्स होने जरूरी है, हमारे पास रिविजन मटेरियल होना बहुत जरूरी है। जो आपके 2022 वाले भैया दीदी है ना, उनकी प्रॉब्लम पता है क्या है, उनके पास नोट्स नहीं है रिवाइज करने को, उन्होंने बात नहीं सुनी। ठीक है, बात नहीं सुनी उन्होंने मेरी, आपको भी समझा रही हूँ, उनको भी समझाया था, उसमें से बहुत बच्चों ने बात सुनी, बहुत ने नहीं सुनी। तो अब क्या प्रॉब्लम है, उनके पास रिविजन करने के लिए मटेरियल ही नहीं है। तो तुम ये गलती नहीं करना, या तो हैंड रिटन नोट्स बनाना कंसिस्टेंटली, या फिर नोट्स इन द मैगजीन, जो आईएएस विजन है, दृष्टि आईएएस है, इसके अंदर ही अंडरलाइन मार्क और पॉइंटर्स लिखना, ऐड ऑन करना, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहीं से मिलती है, जो एग्जाम आयर पे मिलेगी आपको, ठीक है ना, वो सब कुछ नोट करना और उनको ही नोट्स ट्रीट करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरेशन,
ड्यूरेशन, ठीक है ना। आपके क्योंकि आप क्लैट 2024 वाले एस्पिरेंट्स हो, तो आपके लिए जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 की न्यूज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, अगर आपका एग्जाम 2023 दिसंबर में होता है, ठीक है। और अगर आपका एग्जाम मई 2024 में होता है तो आपको मई 2024 तक की न्यूज़ कवर करनी पड़ेगी। क्लियर है इस बात पे। अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो पूछोगे दी अगर 2023 की न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन होगा कि दी हमारे लिए तो 2023 की न्यूज़ इंपॉर्टेंट है ना, तो हम 2022 की न्यूज़ क्यों पढ़ें, क्यों हम अपना दिमाग खराब करें, है ना। वाई शुड वी रीड 2022 न्यूज़, बिकॉज you need to practice for 6 months that how to read the newspaper, how to understand things, what is happening around the world, because I know most of you watching this video have never read the newspaper. You just read the newspaper, the page that tells you which Bollywood celebrity is dating whom, which new movie or season is about to come out. You just read that, but no more. CLAT is not going to ask you the date when Ranbir and Alia got married. No, they're going to ask you something which you might even not know that is going on in the world. So you need this time to understand the news. Don't miss out on this time, please. With folded hands, I beg you, start reading the newspaper. Now, the question is how much time to CLAT? How much time to CLAT every day? Yes, you CLAT is not an exam that you say I'll study on the weekend and I'm done. No, no, you cannot. You need to date CLAT every day. You need to go on a date with CLAT every day. CLAT is a very very demanding spouse, a very very demanding partner. ठीक है, बहुत demanding है. Every day you need to give minimum 3 to 4 hours minimum. If you can give 4 hours plus, that is great. 4 hours plus, great, but this is minimum. If you cannot give this much of time, then I'm afraid that it is going to be very very difficult for you to complete the syllabus, right? So 3 hours तो minimum है, 2 to 3 hours तो minimum है every day. ठीक है, 4 hours would be very very good. 4 hours plus, great. How to utilize this time, how to utilize this time? So you are going to give, now every day you're giving 3 to 4 hours, every day 3 to 4 hours. ठीक है, how to use this time? You're going to read for 1 to 1.5 hours, you're going to read the newspaper. With me also you can read the newspaper. It would be great if you read the newspaper yourself and hear to my analysis also, like in the morning, in the loo, whenever you're free, whenever you watch those reels. No, everybody watches reels. I know तुम सब watch करते हो. मेरे 2022 और 2023 वाले एस्पिरेंट्स बता देते हैं मुझे कि दीदी हम हर रोज रील्स वॉच करते हैं. प्लीज रील्स वॉच करने के बजाय वो 1 घंटा मेरा सेशन सुन लेना. ठीक है, तो न्यूज़पेपर एनालिसिस, और फिर उसके बाद बाकी जो टाइम बचा है 2 घंटे या 2.5 आवर्स, ठीक है, जो बचा है उसमें हम एक टॉपिक, वी आर गोइंग टू स्टडी एनी वन टॉपिक. वी आर नॉट गोइंग टू कंप्लीट दैट वन टॉपिक ऑब्वियसली इन दिस like 2 to 2.5 hours in a day. We are going to read some part of that topic every day, and one fine day we are going to complete it and then move on to the next topic as per the plan, right? On weekends I want 6 to 7 hours or at least 5 to 6 hours, because we're going to revise, we're going to watch the extra video that is going to happen on exam IR, and we also have to follow the magazine. When we are going to study the magazine on weekends, when we are going to study the magazine while we are traveling to school, if we are going by bus, if there is a period in school wherein you're free and you can keep the book नीचे and ऊपर टीचर पढ़ा रही है, ऐसा भी करेंगे. टॉपिक 1 कौन सा उठाना है, ये तो हर रोज होगा ना, आपका न्यूज़पेपर वाला पार्ट हर रोज होगा. एवरी डे यू हैव टू स्टडी द न्यूज़पेपर, राइट. टॉपिक नंबर 1 कौन सा उठा रहे हैं हम? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर को समझने में बहुत हेल्प करती है. तो 60 डेज के अंदर हम अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर सकते हैं. विली में से हम पढ़ेंगे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा खुद का कोर्स भी है जिसमें मैंने आपको सब कुछ समझाया हुआ है. अगर आप चाहते हो कि मैं 2024 वालों के लिए लाइव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स आपको पढ़ाऊं, तो कमेंट डाउन बिलो
आई वुड लव टू टीच यू ऑल, ठीक है ना। तो फिर हम 60-70 डेज में बढ़िया तरीके से 1-1 घंटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे हर रोज, और आपको मैं समझा दूंगी, ठीक है। तो विली की बुक में से पढ़ना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बोथ लीगल जीके एंड लीगल रीजनिंग, ठीक है ना। दोनों टाइप के हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे विली में से। अब लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग डिटेल में कैसे कवर करना है पार्ट 1 में बताया हुआ है, यहाँ पे मैं रिपीट नहीं करूंगी, वो वीडियो हर बच्चा देखेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टॉपिक नंबर 2 कौन सा है, मतलब आपने 60 डेज के लिए पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, अपने नोट्स में मतलब अपने प्लानर में डाल दिया। तो मैं हिसाब किताब लगा रही हूँ कि मोस्टली बच्चे, अगर जून में आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे, जून में अगर आपकी हॉलीडेज हैं, यू डोंट हैव स्कूल, प्लीज ट्राई एंड कवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1 month, एंड देन July, August, maybe you're starting late, right? So by June, July, August, you complete your Indian Constitution, and for September and October, you can cover in September and October, you can cover क्या कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अरुण शर्मा की बुक फ्री पीडीएफ भी है, कैसे पढ़ना है बताया हुआ है। टॉपिक नंबर 3 आपका होगा टॉर्ट्स, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। नवंबर दिसंबर आप अपना इसको दे दो। उसके बाद हमारा स्टार्ट टेकिंग न्यूज़पेपर मच मोर सीरियसली, बिकॉज हमारा 2023 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर खत्म। टॉपिक नंबर 4 जो हम जनवरी में करेंगे वो है फिगर्स ऑफ स्पीच एंड अजम्पशन। उसके बाद फरवरी में हमारे 11th के एग्जाम्स होंगे, वो देकर हम मार्च के अंदर टॉपिक नंबर 5 करेंगे अपना आर्ग्यूमेंट्स, और फिर इन्फ्रेंस और कंक्लूजन टॉपिक नंबर 6। उसके बाद टॉपिक नंबर 7 जो हमारा होगा वो होगा मैथ्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि हम मई और जून में कर सकते हैं। जून के अंदर हमारी दोबारा से समर वेकेशंस आ जाएंगी, तो यहाँ पर तो हमने सारा जो बचा खुचा सिलेबस है, वॉट एवर इज लेफ्ट, वी आर गोइंग टू complete here, and thereafter we have so many months left for revision. July, August, September, October, November, 5 months, 5 months, 5 months, ठीक है। Now you can also cover some extra topics like that of puzzle test from your verbal and non-verbal reasoning by RS Agarwal, और verbal reasoning from RS Agarwal, ठीक है, by RS Agarwal, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है ग्रामर, सब्जेक्ट वर्ब। ग्रामर के अंदर आप कौन से टॉपिक्स पढ़ सकते हैं, देखिए जो ये टॉपिक्स हैं, दीज आर नॉट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दीज आर टॉपिक्स दैट यू हैव टू कवर वंस यू आर डन विद योर सिलेबस, राइट। विच आर द टॉपिक्स, टेंसेस, subject verb agreement, articles, prepositions, these you have to cover, right? If you have any book like any notes or anything, you can cover from there, or you can buy a book called SP Bakshi, वो तभी बाय करनी है, अभी बाय नहीं करनी, अभी बाय नहीं करनी, अभी बाय नहीं, अभी बुक बाय नहीं करनी, बार बार बोल रही हूँ। अगर अभी भी बाय कर लोगे ना तो मुझे दुख होता है यार, अभी नहीं जरूरत, पहले सिलेबस तो खत्म कर लो, ऐसी किताबें मंगवा रहे हो, जो बोला है वो मंगवानी है, ठीक है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, अगर तुम प्रॉमिस कर रहे हो कि दी जून से ही प्रेपरेशन, जून 2022 से ही प्रेपरेशन वी आर गोइंग टू बिगिन, देन जून और जुलाई में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कवर कर दो, बिकॉज जून में तो तुम्हारी हॉलीडेज ही हैं, हॉलीडेज है ना, तो ये हॉलीडेज का यूज करना स्टार्ट कर दो। जून के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुलाई में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फटाफट से खत्म कर दो, ठीक है। और अगस्त के अंदर, मतलब जून के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन साथ साथ चला लो, हर रोज 2-2 घंटे दो इनको, हर रोज 2-2 आवर्स दे दो इनको, ठीक है। और बाकी न्यूज़पेपर को, बस इतना ही मांग रही हूँ। उसके बाद अगस्त में टॉर्ट, सितंबर में क्रिमिनल लॉ, अक्टूबर में कॉन्ट्रैक्ट्स, नवंबर में अजम्पशंस, दिसंबर में आर्ग्यूमेंट्स, जनवरी में कंक्लूजन, फरवरी फिगर्स ऑफ स्पीच, मैथ्स, ठीक है। और मार्च के अंदर कवरिंग एनी टॉपिक दैट इज लेफ्ट। अगर तुम्हारे यहाँ पे एग्जाम्स भी हैं तो ये वाला पार्ट यहाँ पर ले आओ, काटती नहीं हूँ, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ पर ले आओ। मतलब अप्रैल तक तो खत्म सिलेबस, अप्रैल के अंदर तो तुम पजल टेस्ट ग्रामर कर लो 15 डेज, ठीक है। 15 डेज ऑफ अप्रैल जून रिवाइजिंग द इंटायर सिलेबस, जून में तो डन डना डन डन हो गया, तुम्हारे पास और ज्यादा टाइम हो गया रिविजन के लिए, और वो बेस्ट है, बेस्ट है, ये टाइम तुम बहुत चीजों के लिए यूज कर सकते हो। अब क्या होता है प्रिपरेशन के अंदर, तुम यहाँ पे अपना थोड़ा सा ध्यान मेरे को दो, अपना फोकस देखो, ठीक है। सबसे पहले हम कंप्लीट करते हैं सिलेबस, कंप्लीटिंग द सिलेबस, ठीक है। तो इसके अंदर भी टाइम लग जाता है, जो मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम स्लो स्लो आराम आराम से कर रहे हो तो कंप्लीटिंग द सिलेबस, सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। कंप्लीटिंग द सिलेबस में तुमने समझा, अंडरस्टैंड किया चीज़ों को, ठीक है, प्रैक्टिस करी, नोट्स बनाए बुक के अंदर ही, ठीक है, सब कुछ करा, और ये खत्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि तुम सब कुछ रिवाइज करते हो, एक बारी सब कुछ उठाकर थोड़े से ही दिनों में रिविजन करते हो अपने जो नोट्स बनाए थे वहाँ से, ठीक है ना, नोट्स बनाए थे बुक में, नोट्स
वहां से रिविजन करते हो। ठीक है, उसके बाद टाइम आता है जब तुम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हो पूरा का पूरा टेस्ट पेपर, जिसको हम मॉक टेस्ट बोलते हैं, टेस्ट पेपर। ठीक है ना। तो टेस्ट पेपर जब तुम प्रैक्टिस करते हो ना, तब तुम्हें पता चलता है कि अरे मेरा ये टॉपिक वीक है। ठीक है ना, वीक टॉपिक्स पता चलते हैं, फिर तुम वो दोबारा स्क्रैच से पढ़ते हो। ठीक है, फिर तुम्हें पता चलता है अरे मेरा तो पेपर 2 घंटे में ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो फिर तुम और प्रैक्टिस करते हो, और प्रैक्टिस कर करके तुम अपना पेपर 2 घंटे में ख़त्म कर पाते हो। ठीक है, फिर तुम्हें और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, रीडिंग स्पीड पे काम करना पड़ता है। पर और ये है कि अगर तुम, बहुत बच्चे क्या करते हैं, जो मिस्टेक करते हैं कि वो यही वाले स्टेप पे रह जाते हैं, यही वाले स्टेप पे, बस ये वाले स्टेप पे। मान लो कल एग्जाम है, आज उनका सिलेबस खत्म हो रहा है, कल एग्जाम भी हो गया, उनका सिलेबस नहीं खत्म हुआ। ठीक है, तो ये गलत है। अगर ये स्टेप को अच्छा टाइम दो, कंप्लीट करो अच्छे से सिलेबस, रिविजन करो, बट फिर इस टाइम को भी, इस स्टेप को भी अच्छा टाइम दो, ताकि पेपर तो कंप्लीट कर कर आ सको। पेपर तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता है बच्चों का, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी होती। तो इसलिए टाइम पे सिलेबस खत्म होगा, तब मुझे पता चलेगी कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, तब जाके मैं टॉप एनएलयूज में बड़े आराम से एडमिशन ले पाऊंगी। अगर पक्की एडमिशन चाहिए, कच्ची एडमिशन है कि हाँ ट्राई कर लो, अगर होती है तो ठीक है, पक्का एडमिशन चाहिए तो ये है, जुलाई के अंदर फिर मॉक्स अटेम्प्ट करोगे, उनको एनालाइज करोगे। एनालाइज कैसे करना है सिखाया हुआ वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर उसमें से निकालोगे कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक है, फिर वीक टॉपिक्स पे काम करेंगे बिल्कुल स्क्रैच में से, मे भी बुक भी चेंज करें कि नहीं ये वाली बुक में से नहीं और बुक पढ़ो। तो वो टाइम तो होना चाहिए ना। अब यहाँ पे तुम नॉर्मल लुइस भी पढ़ लो, 5 महीने में जो मर्जी पढ़ो अब। ठीक है, रिविजन करोगे, फिर मॉक्स दोगे, फिर वीक टॉपिक्स पे 2 महीनों में जो मर्जी करो यार। दिसंबर में फिर तुम्हारा एग्जाम अगर होगा तो हो जाएगा। ये बेस्ट है, ये बेस्ट है। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप चाहते हो कि मैं आपका शेड्यूल बनवाऊं, अगर आप बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो मैं कहूंगी कि आप मेरा जो सेशन है वो बाय करें। ₹2000 का मेरा सेशन है, 1-on-1 सेशन, वो आप बुक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ आप अभी अगर वो बुक करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया तो आपको वो सेशन खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे मेंटरशिप सेशंस बाय करना चाहते हैं, जहाँ जहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं 2 साल तक आपको पूरा पूरा बताऊँ, आप मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 2 साल के लिए कभी भी, तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यू कैन गो हेड एंड चेक दैट आउट, राइट। तो ये वीडियो में आपको सब कुछ मोस्टली समझ आ जाना चाहिए। दोनों पार्ट्स ऑफ वीडियो देखना। अगर ये देखकर आप कह रहे हो हाँ ठीक है नहीं आया समझ, पार्ट 1 भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी फॉलो करो, राइट। दोनों वीडियोस देखो, और जो 10-15 वीडियोस की प्लेलिस्ट मैं नीचे मेंशन करूंगी वो भी देखो, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। बहुत सारे आपके जितने भी डाउट्स होंगे मोस्टली क्लियर हो जाएंगे, देयर बाय फ्री में ही आपका काम बन जाएगा, राइट। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपकी कोई कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट करिए, मैं पक्का उसका सोल्यूशन आपको दूंगी। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, @IamLogiri के नाम से मैं वहां पर हूँ। लॉगरी साइनिंग ऑफ, एल सी यू सुपर सून, बाय एंड टेक केयर।